then I'll give you the platform. Neelu, it is live on YouTube now, and Yes. you can introduce. Thank you, Priya. Hello, good morning, Dr. Neelu. Good morning. All the best. Thank you. Good morning to all present on this platform. Wishing hope, abundance, and warmth for everyone. I welcome all the participants to this TalkFest on cyber safety. This TalkFest has been organized by Bombay Teachers Training College Women Development Cell and in collaboration with MMK College of Arts, Science and Commerce. Prayer is an amazing privilege. It can move the heart of God and initiate positive outcomes. Let me request all of you to remember the Almighty with a grateful heart. Please play the college prayer. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, Supriya. The number of teen and adult victims of cyberbullying is growing due to various reasons. Easy access to social media, the anonymity of the internet, and natural desire for attention. Girls and women are bullied, and it triggers worries, nervousness, and anxiety. In such times, what they need is a safe and secure environment, and also a lot of awareness about the possible threats. Today, we have invited a celebrated cyber expert to talk to us and help us understand the nuances of the cyber world and also how we can try to keep ourselves safe. Mr. Sachin Dedhia. Mr. Sachin is an independent cybercrime investigator and a certified ethical hacker from the EC Council USA. He is also a certified international trainer in the field of cybersecurity, ethical hacking, cybercrime investigations, and digital forensics. For the last many years, he's been working as an independent cybercrime investigator and also as an IT security expert for various MNCs, SMEs, government departments, corporate, and individuals. He has also provided training to Mumbai Police,
and various other state police departments. He's also been assisting various other government departments of India with respect to their cyber crime queries. Mr. Sachin Dedhia founded Skynet Secure Solutions, a company headquartered in Mumbai that specializes in and works in the field of cyber security and digital forensics. Mr. Sachin, welcome to this platform, and I extend warm greetings for the day on behalf of all of us at BTTC, Team BTTC, and Team MMK. And before I hand over the session to Mr. Sachin, let me also inform all those watching this event on Zoom or live on YouTube that this is a TalkFest and I will take up questions from our participants throughout. So please post your questions, queries, doubts, anything that comes to your mind that also that you would like to ask him during the event, during the presentation that he makes. He will also answer the queries that you post. So please post them in the chat boxes. Let me hand over the session to Mr. Sachin so he may directly talk to you all about the theme and also enlighten you about the various ways cyber crimes are systematically organized and how you can easily keep yourself safe. Mr. Sachin, a study shows that over 91% of the internet users are unaware of the online scams and are therefore worried about their security. There is cyberbullying, there are scams that we come to know every day, but still a new scam comes up each time and these scammers never run out of ideas. Many a times we feel, oh, this will not happen with me. But then who will take the guarantee? What if it happens? What do you have to tell us about this, Mr. Sachin? You may display your screen and also show us a few tips regarding the solutions that you offer to us. Over to you. Sure. Thank you, ma'am. Thank you for once again giving me the opportunity. And I would also like to express my gratitude for few of the participants initially who still remember me for all the sessions that I have given before. And it's very heartening to see that people, like the time I've come online and few of the participants said, okay, yes, we have listened to you. So it's very heartening. And thank you. Thank you for remembering me this way. And so now I would like to start with this. And just as ma'am suggested, I would like to keep it very practical one. Okay. Yes. So I would like to give you some kind of insider tips or ways that I would like to answer all your queries. Okay. Now, first thing which I would like to start here is also you can see that, see, based on me in so many years of, in this industry of cybercrime and ethical Sir, hacking. may I interrupt? Sure, yes, Voice ma'am. is breaking and it is also a little low. Okay, wait, hold on, ma'am. Now is it better? Yes, it's better now. Yes, okay. So now, what I've seen is in the last, actually, all the people in our industry, what we have seen is in the last 6 months, the trends have actually changed, especially during COVID. Okay. So is the so-called criminals or the hackers or the scammers now they have got more bold, they have got more braver. So in a particular day before COVID, there used to be one or two phone calls, to try to scam. कि आपका Google Pay का account block हो जाएगा, आपका Paytm block हो जाएगा, आपका credit card lock हो जाएगा. Now, do you not believe they are making calls at even 5 o'clock, 6 o'clock in the morning till 10 o'clock, everything like that, in bindas. In the sense they have become so bold that even me and along with the cops, we make a call back to them. They say, sir, अभी तो COVID है. कौन सा पुलिस हमको पकड़ने आएगा? Where do they have the time? And we are at so and so place. Come and catch us if you can. Because now they know that the cops are so busy that and asking a Bombay cop to investigate a case over there in Jharkhand or that kind of areas, it's very, very difficult. And now they have understood. So, now what is happening here is AC room में बैठते computer पे टक टक कर रहे एक cutting चाय पी रहे and they are just making hits, in the sense they are just targeting people, senior citizens, because fortunately for them, now I'm just giving an example. If there were 100 people, those who were doing online activities before COVID, I'm pretty much sure nowadays, now that number would have been increased to 120 to 150 basically. Because during COVID, most of them people have begun to come online itself, right? So that is the reason
Now, surprisingly, we have even seen cyber crimes been increasing a lot itself. So what I'm going to do is I'm going to share my screen and I'm going to show you a particular PPT over here. Okay, and these are the new kind of websites which have been operated now. Okay, So your volume is so very I'll just open this. Okay, okay. Now can you see? yes, we can First see of all, your can you screen. see my screen? Yes, we can. Yeah. So these are all the list of fake websites. Okay, which have been created. I would request please spend 1 or 2 minutes, look into these websites. Please tell me what do you find unique in this, or what do you find different in this list of websites. All of क्या the सोच के website websites, the बनाई गई है? name suggests that you are going to give, this website is going to offer some insight into the corona, or the probably a vaccine or some awareness or some rules or updates, all of that about the corona. So anybody will probably try to. Perfectly right. They are playing on, yes, they are playing on the psychology. They are playing on the psychology. But now I'm giving you 2 minutes of time, 1 minute of time. Chalo. How will you identify which website is fake and which website might be genuine? Most of them are fake only, but if you just look at the names of the websites itself, you should be able to identify कि इसमें से कौन सा fake website है. Something Sir, dot all the XYZ xyz.cc. and dot digital. All websites are having square brackets. websites are in the square bracket. Okay, sorry. I'll just share my screen again. So screen to You stop. Yeah. So you can see. Okay, I hope all of you can see. No, Dot not .tk extension है. your Dot. visible. Can you see my screen now? No. Now? Wait. No, It sir. Stop shows share. you have I'll share started my screen again. sharing. Now. No, not yet. Not yet. Not yet. Just hold on. Just hold on. No, not yet. Yes, now it's visible. Okay, now. Yes, it's So now one of the ways through which you can identify कि ये fake websites क्या है. Dot .cc का extension है. Dot .tk extension है. Dot .space है. Dot .digital है. Dot .xyz है. Generally, I hope all of you know the extension of the websites would be what .com, .in, .co.in, and something like that. But you should not find such weird extensions like XYZ, digital, space, TK. Please remember this. Okay, these are the ways through which you can actually identify कि किसी ने आपको fake mail या fake link भेजा है कि नहीं भेजा है करके. Okay, I'll just give you 1 or 2 more examples. Look at this. WHO. Okay, WHO is sending you a mail. Okay, go through the attached document on safety measures regarding the spreading of coronavirus. Okay, now you think WHO, इतना बड़ा organization, will have time to send mails to every individual? Okay, hope not possible, and they would not like to do that also. But अगर आपने अभी आपने को अपने लिए क्या है साइकोलॉजी क्या है WHO से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो सकता है which better organization than WHO. But yes, if you do that, if you click on the safety measures, you are done. I hope ये clear है. See, these are few of the safety tips which I would like to share with the with ma'am, and I hope she will pass it on to all of you. These are all the cyber security tips which have just recently coming out. ये बहुत recent है. Cyber crime, fake news. I can give you all this, updated list of new cases around your city. अगर इस लिंक के ऊपर टिक करोगे तो आजू बाजू के केसेस पता चलेंगे. लेकिन आपने जैसे ही लिंक के ऊपर टिक किया ना, आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया. so your voice is gone. Today there's something wrong with the voice on Zoom.
So we can't hear you at all. No, sir, there's too much lag. We can't hear you at all. Oh. He probably may re-log into Zoom. But let me inform everybody today that it's important that we keep our eyes and ears open to this session, and whatever sir has to tell us, let's try to understand how important it is for us to, be alert while we are on the internet. And it's extremely simple for everybody to understand this very simple thing, that the internet is here on your mobile. Throughout the day, you chat with people, you stay online. You check your emails, you stay online. So it's important that you have to be very alert and try and understand the ways and means of these scammers, and how they affect, and how actually they are trying to extract money out of us. And there are other ways that the cyberbullying is happening. So one has to be extremely, extremely alert. Dr. Neelu? Yes, sir. Yeah, in the meantime, since Sir is getting connected, a question in my mind is what are the security measures that we should take to avoid the threats associated with virtual meeting platforms like Zoom that we have been hearing a lot in the past? So Sachin sir has joined, and will definitely throw some light on this also. Okay, I'm sorry. Actually, the thing here is I'm not in Bombay and I'm in Chandigarh for an income tax department work. और जो हम लोग को quarters दिए गए, surprisingly, like you can understand, there is not much of internet. So I'm just trying. Okay, so I heard the sir's question. Sir, Zoom के लिए ना, especially Zoom के लिए, if you are either conducting a meeting via Zoom or if your own children are attending the meeting via Zoom ना, Zoom के ऊपर एक advisory जारी करी है. I'll just share the details over here. I'll share my screen. Okay. Can you see this? Zoom meeting advisory? Yes. Yes. See, दो तीन चीज है. आप लोग जब से Zoom शुरू हुआ है ना, जब से स्कूल और कॉलेजेस ने Zoom शुरू किया है, मेरे को 10-15 दिन में एक केस तो आता ही है विद रिस्पेक्ट टू Zoom. अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, ऑल द स्कूल, इनफैक्ट मेरे को तो अभी 6th स्टैंडर्ड का भी क्लास मतलब स्कूल का एक केस आ गया था कि स्टूडेंट्स है Zoom मीटिंग अटेंड कर रहे हैं एंड देन समबडी विल अटेंड विद द सेम नेम and then we'll give some bad remarks or we'll post something and we'll write something or chat karega and something like that. But अपने point of view से to safeguard our data and to safeguard our devices जिसके ऊपर हम लोग Zoom install करके run कर रहे हैं ना, please go through this particular safety tips जो मैंने मेरी screen के ऊपर रखे. If you are going to be the host, I am just telling, if you are a college host, अगर आप कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू बी द होस्ट, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है. ओके, तो जैसे अभी Zoom मीटिंग सेट किए हैं मैम ने, तो मैम हैज टू एंश्योर दैट ऑल द सिक्योरिटी सेटिंग्स हैव बीन डन. Basically, in the sense you should not allow join before host, so let the host first join, then let others join. Okay, you can lock down your meeting that after some point of time nobody else will be able to join. You can turn off the participant screen sharing. You can use a randomly generated ID. You can use waiting rooms, so ma'am can actually see कि किसको allow करना है, किसको नहीं allow करना है. Most importantly, generally अभी ये Zoom ने खुद ने ही disable करके रखा है. You have to disable file transfer option. बिकॉज अगर आपका फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन ओपन है ना, तो ही वायरस एक दूसरे के साथ स्प्रेड हो सकते हैं. अदरवाइज नाइट नाउ Zoom इज कंसिडर्ड मोर सिक्योर. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, फर्स्ट इज गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, देन कम Zoom. Zoom is like Android. उसमें फीचर्स बहुत अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है, इट इज मोर रिच विद फीचर्स. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी, देन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड गूगल मीट लाइक एन आईफोन. सिक्योरिटी वाइज अच्छा है, बट इतने फीचर्स नहीं है उसके अंदर. So, but in case if you are going to use Zoom, then please go through this advisory meetings. Go through this. If you want now, government of India ने भी एक Zoom advisory दी है. I'll just share that. अगर मेरे पास वो है नहीं अभी फिलहाल के लिए, but I'll share that PDF also. Zoom advisory के ऊपर, basically. Okay, but this is the PPT anyways which I'm going to share. तो ये please ensure करना कि आप लोग ये steps follow कर रहे हो करके.
And if you are going to be the host, you need to record that meeting along with आपके admin panel में ना users के साथ उसका कौन सा IP एड्रेस है जिसके थ्रू उसने लॉगिन किया है, उसका एक लिस्ट आता है. वो लिस्ट भी रेडी होना चाहिए या वो लिस्ट दिखना चाहिए या लिस्ट अवेलेबल होना चाहिए करके. Yeah, that's great, sir. Thank you so much. Yes, ma'am. Any other questions that we have? Currently, we don't have. So, Okay. Sir, can I ask one question? Sachin, Yes. sir, Dr. Ansari here. Hmm. Sir, from past few days, I am getting a message from number 9571243029. मैसेज में ये लिखा हुआ है कि अंसारी सर आपको 3500 हमने पेटीएम से पे कर दिया है, आप ये फला फला चीज डाउनलोड करिए और आप अपना पैसा ले लीजिए. जबकि ऐसा मेरा कोई परिचित नहीं कि जो मेरे को 3500 ऐसे भेजेगा. सर उस मैसेज में कोई हाँ, लिंक या ऐसे भी कुछ है है. क्या? हाँ, मैंने किया डाउनलोड करने नहीं, के लिए? मैंने किया कुछ नहीं किया. बस. तो मुझे मालूम है वो फेक है, हाँ. बट ये इनको नंबर कहाँ से मिलता है एंड हाउ दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स सर? सर नंबर तो अभी बहुत कॉमन है. नंबर ढूंढना मतलब डेटाबेस निकालना, ईमेल आईडीज निकालना और नंबर निकालना, तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग बेसिकली. और ये आपको नहीं, उसने तो मेरे ख्याल से कम 1, 2 या 10 लाख लोगों को भेज चुका होगा सब. करेक्ट. हाँ. और अभी तो क्या सर, सब कंप्यूटराइज्ड है. देयर इज एन एक्सेल शीट, ओके, और कंप्यूटर रहता है जहाँ पे मास एसएमएस भी जा सकते हैं करके फ्रॉम ए सेम नंबर इटसेल्फ. पीरियडिकली भेजते रहते हैं, लाइक एवरी इंटरवल के अंदर उन लोग भेजते रहते हैं. Now everything is so automated that basically a 12th standard फेल पर्सन भी ये कर सकता है. एक्सेल की शीट है जिसमें सारे नंबर्स है, सॉफ्टवेयर है जो वो सारे एसएमएस भेजते रहता है, और वो एसएमएस के अंदर ही लिंक है. अगर आपने लिंक के ऊपर टिक किया, सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड हो गया, तो उनके डैशबोर्ड के ऊपर दिखता भी है कि कौन से फोन ने वो लिंक डाउनलोड करके रखी है. ओके. नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर, क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर कि ये नंबर फेक है, तो मैंने तो कुछ नहीं किया. अच्छा सर, इससे पहले एक नंबर 750 जो दिल्ली का था, मैंने चेक करने की कोशिश किया था, उसमें ये लिख कर आया था कि यू हैव वन सम 2.5 लाख थ्रू केबीसी. तो आप ये फला फला चीज को डाउनलोड कर दीजिए, देन यू विल योर अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर टू योर अकाउंट. सो अगेन आई वाज वेरी अलर्ट अबाउट दिस पार्ट कि ये भी एक फेक चीज है. सर मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या हो गया है पता है, आपका नंबर या तो फिर बहुत पॉपुलर हो गया सर, या आपका नंबर एक ऐसा डेटाबेस पे चला गया है जो ये डेटाबेस बहुत जगह पे घूम रहा है सर. मतलब your number has become a part of some database where it has been widely used, or like this kind of a thing. Because अगर आपको ऐसे 2-3 टाइप के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं ना, which means your number has become a part of database which has been widely circulated now basically. तो उसको ब्लॉक करने के बाद भी कुछ मतलब उसका सोल्यूशन नहीं है क्या? अब नंबर तो ब्लॉक कर दिया गया. नहीं सर, एक्चुअली नंबर को आप ब्लॉक करो सर, वही एक सोल्यूशन है. लिंक के ऊपर टिक मत करो, ओके, दैट इज वन ऑफ द फ्यू बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू सर. बिकॉज अपने लिए इंडिया में क्या हो रहा है सर, इनकमिंग इज फ्री बेसिकली. तो वो कितना नंबर से अलग अलग ट्राई कर सकते हैं ना सर, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. हाँ, मुझे लगता है कि वो एक ही बंदा है और जो शायद हर तरीके से ट्राई करने की कोशिश कर रहा है. एसएमएस करके है या फिर व्हाट्सएप करके है, या देयर आर मेनी वेज टू डू ऑल दिस थिंग्स. यस सर, यस सर. तो मतलब मुझे हमको लिंक नहीं वो करना है और उसको ब्लॉक कर देना है, यही इसका सोल्यूशन है ना सर? ठीक है सर, ओके. पहले तो मैसेज डिलीट, नंबर ब्लॉक कर दो सर, मैसेज डिलीट कर दो. ओके ठीक है. यस, थैंक यू सर, थैंक यू. Hello, sir. yes sir. Sir, this threat also exists on WhatsApp because Yeah, yes, sir. many unknown numbers come, and how I don't know how they get the number, and we receive unknown number messages, promotion or some sales or something of that sort, which I normally delete the entire message. But is there any other way in which we can take precaution? सर देखो, अगर आपको कभी भी कोई अननोन नंबर से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है ना, एंड इट लुक्स लाइक ए मास एसएमएस और a mass message kind of a thing, please ensure that the message does not if the message contains any link, okay, or anything that is been asked to share your details or download ना, उसको outrightly reject कर देना सर, इग्नोर करो बेसिकली. मतलब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया कि आपको ऐसा ऐसा सेल है, अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो आपको आईफोन भी मिल जाएगा, या आईफोन सेल फॉर 7 रुपीज. आईफोन का कवर भी आजकल 7 रुपए में नहीं मिलता है, बट लोग है कि सोचते हैं चलो 7 रुपए में सेल है तो जाके हमारा 7 रुपया जाएगा. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इस पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आपको लगता है कि यार मेरा 50 रुपया ले रहा है, मेरा 100 रुपया ले रहा है, मेरा 200 रुपया ले रहा है. नहीं, वो आप जब लिंक के ऊपर टिक करते हो, कोई सेल वाली वेबसाइट खुलती है, उसमें आपको कोई डिस्काउंटेड गुड्स भी मिल रहे हैं, दे आर नॉट आफ्टर योर 100, 200, 5,000 रुपीज. हाउ विल यू मेक द पेमेंट टू दैट वेबसाइट?
आप समझ रहे हो, जैसे मैंने एक फेक वेबसाइट बना ली, ठीक है, और मैंने आज आपके सारे पार्टिसिपेंट्स को एक मैसेज भेज दिया, अरे भाई आ जाओ दिवाली का सेल है और मैं आपको पेन ड्राइव दे रहा हूँ 200 रुपये में। तो आपको लगा अरे पेन ड्राइव 400 रुपये में मिलती है, 200 रुपये में दे रहा है, तो इतना भी सस्ता नहीं दे रहा पर इतना भी महंगा नहीं दे रहा, तो चलो 200 रुपये में हम लोग खरीद लेते हैं। बट आप जब वो 200 रुपये पे आओगे, ठीक है, तो वो तो मेरी बनाई हुई वेबसाइट है, क्लियर है। आप मुझे बात बताइए, आप वो 200 रुपये का पेमेंट कैसे करोगे? आप तो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, ठीक है, और मेरी बनाई हुई वेबसाइट है, तो मैं वो सारा डिटेल्स सेव कर दूंगा। और मैं शरीफ हूँ, मैं इंडियन चोर हूँ, मैं थोड़ा शरीफ हूँ, तो मैं एक्चुअली आपको पेन ड्राइव भी भेज दूंगा। आपको लगेगा अरे ये तो सुपर वेबसाइट है, आप और फ्रेंड्स को बोलोगे, वो और आते जाएंगे। फिर एक टाइम के पास मेरे पास इतना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स आ चुका होगा, या तो मैं उसको बेच के पूरा मेरा पैसा वसूल कर दूंगा, या तो फिर एक दो क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्वाइप करूंगा, तो मेरा सारा पेन ड्राइव का कॉस्टिंग निकल जाएगा। So that is the reason, if you remember my previous sessions also, I'm always of the opinion that we should learn to expose only one card to the entire world. जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरा एक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एक बैंक अकाउंट है, जिसमें लिमिट ही 30,000 रुपीज की है। लूट लूट के कोई मेरे को 30 का ही लूट के जाएगा, और वो ही लॉस सहन करने का कैपेसिटी रखा है। मतलब इन द सेंस, ओला, उबर, वाइबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आईआरसीटीसी, कभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, किधर भी जा रहा हूँ ना, वो एक ही कार्ड एक्सपोज कर रहा हूँ जिसकी लिमिट 30 की है, बस। किधर भी जाओ वो कार्ड एक्सपोज करो। अच्छा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो पीछे बैंक अकाउंट लिंक किया गया है, वो वही बैंक अकाउंट है जिसकी लिमिट भी 30 की है, बैलेंस ही नहीं है बेसिकली। आई होप यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट्स, बिकॉज नाउअडेज पिछले 6 महीने में तो हम लोग को लगता है कि भाई कॉप्स बेचारे टायर्ड है, और ये क्रिमिनल्स बेचारे, और मतलब क्रिमिनल्स तो और एनकरेज हो रहे हैं, मतलब बेसिकली अभी तो जो आए वो हाथ में आ रहे हैं, वैसे उनका सिचुएशन हो गया है करके। तो nowadays you will also, आप लोग ने भी मार्क किया होगा, the frequency of getting such kind of SMSs or WhatsApp messages or even the calls have increased a lot Even compared to pre-COVID. international calls are there nowadays. Yes, basically. सर, सचिन सर, एक और प्रश्न पूछना था। नॉर्मली लोग अपने मोबाइल फोन पर ट्रू कॉलर जो होता है ना, ट्रू कॉलर आईडी हाँ। डाउनलोड करके रखते हैं, तो हाँ। दैट इज, मुझे तो सर शायद लगता है कि वो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं है ट्रू कॉलर किसी और चीज से जाके कनेक्ट होता है और ये डेटा वहां चला जाता है, तो हाँ इज इट सर, देखो सेफ टू डाउनलोड ट्रू कॉलर और इट शुड बी अवॉइडेड? सर, जनरली अगर आपने ट्रू कॉलर डाउनलोड कर दिया है ना, बेसिकली तो आपका डैमेज हो चुका है। जी जी। मतलब आपका डेटा अच्छा वैसे भी जा चुका अच्छा। है, तो अभी हाँ आप हाँ। उसको यूज करो तो भी चलेगा। देखो, ट्रू कॉलर का काम क्या है पता है सर, आपने जैसे ही ऐप डाउनलोड किया ना, आपके सारे कॉन्टेक्ट उठा के लेके जाएगा बेसिकली। बराबर, राइट। बट हाँ सर हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी आप एक चीज क्या कर सकते हो हाँ कि हाँ आप है ना ट्रू अपने फोन के एप्स के सेटिंग्स के अंदर जाइए, और ट्रू हाँ। कॉलर के है ना 2 परमिशंस को निकाल दीजिए, एक है लोकेशन और एक है एक्सेस टू गैलरी स्टोरेज। ओके। बिकॉज इससे ट्रू कॉलर क्या करता है पता है, आपका लोकेशन का भी एक्सेस लेता है, प्लस अभी आपने फोन में जितने भी फोटो लिए, आप फैमिली हाँ हाँ। में किधर गए और आपने फोटोज लिए ना, unfortunately now Truecaller is also taking access to your gallery photos also, storage, वो आप उसको रोक दीजिए सर, ओके। ठीक है। आपको फोन आया, अगर वो हम्म। जो नंबर आ रहा है वो आपके डेट कांटेक्ट में ही है, तो के जो डेटाबेस में उसके सामने नाम बताएगा। अब उसको क्या फर्क पड़ता है कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, आप बॉम्बे में हो, लोकेशन से उसको क्या राइट लेना देना है, फिर भी उसको लोकेशन राइट। चाहिए। अच्छा, मेरा फोन का स्टोरेज से, मेरा फोटो से क्या लेना देना है? तो मैंने क्या किया ना सर, मैंने उसको सारा डिसेबल करके रख दिया, मैंने उसको लोकेशन की परमिशन नहीं दी है, ना ही मैंने उसको स्टोरेज का परमिशन दी है। इससे एक प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ। अगर सपोज आपको फोन आएगा ना, ट्रू कॉलर आपको इमीडिएटली बता देगा। मुझे फोन आता है ना, तो मुझे 1-2 सेकंड या 3 सेकंड का डिले करके बताता है, बट मेरे लिए वो चलता है सर, बिकॉज फॉर दैट आई एम नॉट दैट क्यूरियस माइंड कि कौन फोन कर रहा है, उसका नाम क्या है, क्योंकि अननोन नेम राइट। होगा भी तो भी मैं कुछ जज नहीं सकता, मैं फोन उठा के करेक्ट। बात कर लेता हूँ। बट आई एम नॉट wanting him to access my gallery photos or even location, sir. राइट राइट। Hello, sir. Hello, sir. This is हाँ। Naresh. Sir, you talked हम्म। about the location. That is okay. What was the next thing that you talked about to be blocked in WhatsApp? सर दिस ट्रू कॉलर के लिए सर, स्टोरेज या गैलरी का एक्सेस होगा। देखो, आप ऐप के परमिशन देख लो सर अभी, अच्छा अच्छा। अगर आपके पास, इफ यू वांट आई कैन गिव यू 1 or 2 मिनट, सेटिंग्स में जाइए, एप्स होगा, परमिशंस होंगे, उसमें ट्रू कॉलर के खाली परमिशंस देख लीजिए, ठीक है। उसमें स्टोरेज या गैलरी का परमिशन भी आप डिसेबल कर दीजिए और लोकेशन का भी डिसेबल कर दीजिए सर। Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. So Thank you. right now I am on Truecaller and I am in settings. I can't see any हाँ option for disable.
I mean, like, नहीं 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 मैम, नहीं 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 नहीं, ट्रू कॉलर के अंदर नहीं, ट्रू कॉलर के ऐप के अंदर नहीं जाना है मैम, वो एप्स फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना है, फोन के Okay. सेटिंग्स के अंदर एप्स के परमिशंस के अंदर जाना है। Okay, I'm on it. हाँ, उसमें बहुत सारे ऐप्स दिखेंगे ना, उसमें ट्रू कॉलर का भी एक ऐप दिखेगा, उसके परमिशंस आप देख लीजिए, उससे क्या क्या परमिशन लेके रखे। So basically, what you have to disable is these two things: access to gallery and location. Yes. Oh God, I have done allow thing on Truecaller for my gallery, for messages, and my other apps as well. Thank you so much, sir. No problem, ma'am. Sir, I have a question. Can I ask you? हाँ, Yeah, regarding that, this thing, the debit card callers, as we had a talk regarding. So sometimes they nowadays also they are get a call like आपका debit card बंद हो जाएगा वगैरह. So how do they, like, because the person who calls don't have any valid proof, like आप ये हम इस बैंक से बात कर रहे हैं और आपका ये बैंक का debit card बंद, like such type of frauds. Can you tell it this in detail, like if they don't have the नहीं, अभी क्या है, इन लोग अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू शूट एरोस, लगा तो लगा, मतलब हिट हुआ तो हिट हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बिकॉज नाउ एवरीबडी नोज दैट यू विल हैव अ डेबिट कार्ड, ठीक है। सो व्हाट आई ऑलवेज टेल इज एनीबडी गिव्स ए कॉल टू यू एंड इफ इट शोइंग यू अर्जेंसी, कोई भी इमरजेंसी या अर्जेंसी बताएगा ना फाइनेंशियल मैटर्स में, आज आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आज आखिरी दिन है, 4 घंटे का टाइम है, ये वो, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, दैट इज द फर्स्ट साइन कि ये कुछ गड़बड़ है। क्योंकि कोई भी बैंक होगा, क्या वो आपको टाइम नहीं देगा? आपका डेबिट कार्ड आज ब्लॉक होना था, तो विल दे नॉट गिव यू मोर टाइम? दे विल सेंड यू मेल, दे विल गिव यू कॉल्स बिफोर हैंड। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपको फोन करके बोलेगा आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो रहा है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपको अपग्रेड नहीं मिलेगा, आज आपका आखिरी दिन है, तो उसको कल इतना बोलो, भाई एक काम कर, 1 घंटे के बाद फोन कर। तुम लिख के बोल देता हूँ, वो ये भी बोलेगा नहीं नहीं 1 घंटे के बाद भी नहीं, अभी कर दो, मैं हूँ, मतलब समझ जाओ कि गड़बड़ है। इट्स ए कंप्लीट साइन ऑफ ट्रबल। एक्सक्यूज मी सचिन सर, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा कि द सेम थिंग हैपेंड विथ मी। एक बार मुझे कॉल आया था संडे के दिन कि मैं मिस्टर अंसारी से बात कर रहा हूँ। बोला हाँ जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं। तो उसने मुझसे कहा कि सर आपका जो बैंक का जो डिटेल है ना, वो हमको अपडेट कर रहा है, मतलब केवाईसी कह रहा था। तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, मतलब आप क्या बोलते हैं, समाज सेवा करने निकले हो क्या, संडे के दिन भी काम कर रहे हो? नहीं बोले सर मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, मेरा नाम, उसने कुछ अपना फला नाम बताया। तो मैंने कहा अच्छा कौन सी बैंक से बात कर रहे हैं? बोले सर जिसमें आपका अकाउंट है। बोला मेरा तो ऐसा कोई बैंक में मैंने आज तक अकाउंट खोले ही नहीं, तो कौन सी बैंक का अकाउंट का आपको बताऊं मैं? बोले क्या सर आप मजाक कर रहे हैं, आपका अभी ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपको परेशानी होगी। बोला मेरा अकाउंट है ब्लॉक, आप बताइए ना किस बैंक से आप बात कर रहे हैं, यू आर मैनेजर ऑफ विच बैंक? तो वो ये उसके लिए वो पजलिंग क्वेश्चन था। उसने 1-2 बैंक का नाम बताया कि क्या मैं डीसीबी बैंक से बोल रहा हूँ। मेरा तो डीसीबी में कोई अकाउंट ही नहीं है। बोला अच्छा अगर डीसीबी में मेरा अकाउंट है तो ये ब्रांच किधर का है, कौन से ब्रांच से आप बात कर रहे हैं? तो बोले मैं फला जगह से ब्रांच। बोला मैं तो इस जगह रहता ही नहीं हूँ। तो मतलब फ्रॉम दिस आई केम टू नो कि ये पर्सन फेक है। और संडे के दिन बैंक के पास इतना फुर्सत है, उसका जनरल मैनेजर मेरे से बात करेगा सब। तो दिस आर द थिंग्स जो हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो वो तो घबराने के लिए अपने को कुछ भी बोलते हैं कि आपका फला ये हो जाएगा, फला चीज हो जाएगा। अरे हो जाता तो हो जाने, तो हम बैंक में आके बात करेंगे फिर आपसे। Yes, राइट सर? yes sir, that is a good indication। संडे को भी अगर कॉल कर रहे हैं, मतलब आप समझ जाओ कि इतना फुर्सत है उन लोगों के पास, और हाउ दे आर टारगेटिंग। और सर ये बात बराबर है, ये तो अभी और इसके लिए बढ़ रहा है ना, बिकॉज कोविड के टाइम पे ऐसे ऐसे ना, अभी इन लोगों के पास बहुत फुर्सत है, मतलब और बहुत डेयरिंग बढ़ गई है इनकी, बिकॉज ऑफ कोविड इटसेल्फ सर। करेक्ट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। हाँ सर हमें एक प्रॉब्लम आती है, बट वी डोंट नो वेदर वी आर राइट और नॉट। अभी भी कोविड ये पेंडेमिक में आवर कॉलेज हैज इनिशिएटेड अ लॉट ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर द स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग इन देम, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग एज टीचर्स, एज स्टूडेंट्स, वी आर एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर। तो कई जगह पे मैंने नोटिस किया है टूल्स में that you can log in with your existing Gmail account or the Facebook account. So there you don't have to actually create any username and password specially for that particular ICT tools,
and you can, if you're already, your Gmail is open, and if you open another website, the ICT tool website, then you just click on the Gmail and you directly enter into that particular website. Right. Our students also give the lesson plans, and they expect the teachers to check the lesson plans by the same method. So many times they don't provide us with any particular So, passcode or sir, something like that. wait, I'll just So is it get safe? That is a नहीं question. सर देखो हाँ सर देखो मैं अभी आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ ठीक है I'll just share my screen now just giving an example sir suppose आपने login via Gmail किया है okay now can you see my screen everybody Yes, we can. okay so now you can see this मेरा एक Gmail account है scan secure okay can you see everybody ये देखो यहाँ पे राइट है अभी यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये मेरा एक लोगो है ठीक है लोगो के ऊपर जब मैं टिक करता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज योर गूगल अकाउंट कैन यू दिस मैनेज योर गूगल अकाउंट एवरीबडी Yeah. ओके जब मैं इसके ऊपर टिक करूंगा ना तो बाजू में ये टैब खुलेगा ये वाला टैब कैन यू सी Yes. अब मैं इसके अंदर है ना सिक्योरिटी में जा रहा हूँ ओवर हियर सिक्योरिटी जब मैं सिक्योरिटी के अंदर जाता हूँ मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ हियर वी कैन सी थर्ड पार्टी एप्स विद अकाउंट एक्सेस कैन यू सी Yes. जब मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ मैंने थर्ड पार्टी एक्सेस हियर नाउ आई कैन सी कि ड्रॉपबॉक्स हैज गॉट एक्सेस टू माय गूगल कॉन्टैक्ट्स Zoom has got access to my Google Calendar. तो भी चलेगा क्योंकि ड्रॉपबॉक्स को सिर्फ गूगल कॉन्टैक्ट का एक्सेस मिला है मतलब मेरे ईमेल आईडी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट Zoom को मेरा गूगल कैलेंडर का एक्सेस मिला है तो भी चलेगा बट नन ऑफ द एप्स शुड हैव एक्सेस टू मेल और गूगल अकाउंट आई होप ये क्लियर है एवरीबॉडी To the mail or Google account. यस Okay. और इवन टू योर गूगल ड्राइव इफ यू वांट टू ट्राई आई कैन गिव यू 2 or 3 minutes अगर आपके पास फोन है आप फोन में अगर आपने आपका ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करके रखा होगा जीमेल वाला एवरीबॉडी you want to see this now Yes, sir. yes then you can do this you know आप क्या करो वो जो लोगो है ना लोगो पे टिक करो Sir, which logo? यार जो ऐप का नाम रहेगा ना आपका मोबाइल का नाम Picture that you've set for Google. yes yes in that manage your Google account manage your Google account के अंदर सिक्योरिटी Yes. और सिक्योरिटी के अंदर थर्ड पार्टी एक्सेस you will see that Third party apps with account access. yes यहाँ पे you should not see any apps which has got full access to your account. So if some app has an access to Google Calendar or YouTube, It is okay. It is okay. That is okay. That is okay. some Sir, access to Google Docs and Google Drive. Google Drive नहीं sir. Google Drive नहीं. Sir, but these are add-on apps of Google Drive only. हाँ तो फिर चलेगा sir. Like Lumin PDF, Form Limiter, Zip हाँ तो ठीक है. Extractor. तो ठीक है. तो ठीक है. तो ठीक है. Okay. अच्छा एक और है इसमें less Apps like Coursera and all, which require your email ID to send certificates back and everything. Yeah, but that Coursera has got access to what kind of your Google data? Only your contacts, calendar, or your Google Mail? I'll check. हाँ. Clear? Yeah, and there is one Sorry. secure app access which is turned off, and linked accounts also no linked accounts. So which means that this account is not linked to anything else. Yes. Any other account. So for Coursera, it shows basic account information. Then it's okay. Then it's okay. Only there's a email address, your personal info. That's it. Okay. Yes. चलेगा. Then it's okay. Yes, so you can proceed.
Sir, but can we remove this access fractionally, or we have to remove that particular app altogether? हाँ नहीं सर, यहाँ से एक्सेस निकाल दो सर। ये देखो मैंने किया ना इधर ड्रॉपबॉक्स के ऊपर टिक किया, रिमूव एक्सेस, तो रिमूव एक्सेस हो जाएगा। ये You can only remove access from a particular account, right? Yes ma'am, you can only that much will do. रिमूव एक्सेस कर देंगे तो उसको फिर अपना गूगल कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, ये मतलब कुछ भी डिटेल नहीं मिलेगा। And most of them, Rajiv sir, you're right. Most of these applications which I can see have access to my Google account are the ones which we've used for online teaching. It's like Kahoot, Mentimeter, Padlet, Pear Deck, PictoChart, all these applications which we are using for online teaching and learning. But all these apps now, you should just ensure that they do not have full access to your Gmail account. But that's it. WhatsApp, it shows that it has access to your Google Drive. Google Drive is okay because there you must be taking the backup of your WhatsApp data on your Google Drive only. Then it's okay. Sir, what is this basic account info? Access to basic account info. That is same. That is same. आपका ये personal info है और आपका email address है. बस that's it. So that's okay, no? That is okay. That is okay, sir. Okay. Okay. Yes. Any other questions? I hope this point was clear. There are a couple of questions on YouTube chat also. Yes, ma'am. You were talking about YouTube, Truecaller. So one of our viewers on YouTube, Arpan Samadar, he asks, now if I uninstall Truecaller, is there anything that I'm doing right? Like what is going to happen? No. Ma'am, even if you uninstall basically, तो मैम मेरी रिक्वेस्ट क्या है पता है कि आप ना ट्रू कॉलर के वो जो दो परमिशन हमने बताए थे, यू रिमेंबर द टू परमिशंस, लोकेशन एंड स्टोरेज, if you disable that, then you are good to go ahead and use Truecaller. All right. So Arpan sir, we've answered your query. Nagraj Rao sir is asking how to identify fake websites. They speak so smoothly that we become a victim for no fault of ours. So yes. See, I would request, if anybody is going to any kind of a websites, I would generally request, because of this Diwali sale and everything like that, do not fall for the greed. मतलब freebies के अंदर मत जाना. In the sense, my request here is please go for branded websites, Amazon, Flipkart, Snapdeals, and everything like that. No other websites, or even if you make the payment for the website now, before you make the payment, Google के ऊपर जाके उसका reviews पढ़ लेना. Give the name of the website, comma reviews, check for the reviews, basically. Okay. Another question, another message that has been received by one of our YouTube viewers is regarding testing for COVID. And get tested for COVID in the comfort of your home. Test worth 22.90 is going to be available only for 750 rupees. So is this a fake or is it? No, ma'am, that is genuine. That is genuine. Genuine है sir. Sandeep Nikam sir, ये genuine है. हो सकता है जेन्युइन हो सकता है बिकॉज कोविड के टाइम पे ना मैम वी जस्ट हैव टू सी कि कौन से किसने भेजा है वो मैसेज. गिव द नेम ऑफ द you can say the what you can say the name of the company which is doing the testing and whether it is authorized to do that or not, and from which part of that, just as suppose I'm just saying an example, I'm staying in Borivali, so I will know all the, you can say all the people those who can do the testing in Borivali, right? But अगर वो बोल रहा है कि मैं अंधेरी से आ रहा हूँ all the way, then I just need to figure it out कि which is your location, which is your area, let me know. Yes. But generally COVID testing पे ऊपर कोई इतना अभी तक तो fraud नहीं कर रहा है सर. Not that we have heard of. Sir, एक question है हमारे student है ECP में उनका, if I have forgotten my Gmail password and that ID does not have any other recovery ID, so how can? Ma'am, then we need to run some softwares or some tools on her computer, basically. तो computer से वो पुराना password मिल सकता है तो ठीक है, otherwise it is very difficult. Sir, there is one question which I would like to ask, sir.
हाँ हाँ. Sir, it is regarding the internet banking basically. Mm-hmm. How safe is the internet banking when we are paying either through debit card or is it NEFT or RTGS? How safe is it? So देखो, the whole banking applications are very very safe. Basically, it will detect our phone or our laptop. तो Hmm. अगर अपने लैपटॉप के ऊपर जेन्युइन विंडोज नहीं है, एंटीवायरस नहीं है, और हम लोग टोरेंट से मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, फिर नेट बैंकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली अपना नेट बैंकिंग हैक होगा ही होगा. Hmm. Basically, right? So that is the reason now banking applications बहुत secured है sir. We need to secure our phone and our laptop on which we are using net banking. Hmm. वैसे. That's a very good thing that comes to light. We have to be more alert. The banks are already alert. We have Yes, yes. we don't disclose our passwords and we don't fall prey to all these kind of fake scammers. Hmm. Sir, one more question regarding many a times while internet banking, we are purchasing something. Many a time, many of them are making payment through their debit card. So whenever once they enter their debit card number over there, so that remains even for the next time also. Yes, yes, yes. So So is that is the that way method the of safe down. or directly transferring from the account is more safe? Sir, directly transferring from the account is always more safe. जैसे आप जो ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर जाके जो डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो डेबिट कार्ड का डिटेल्स सेव हो जाता है. तो जनरली दैट इज नॉट सेफ सर. Oh, Basically, so if you're making the payment through net banking, prefer more. okay. Thank you, sir. Thank you very much. So there Sir, is I have a question. yes, Yeah, my Gmail account is from 2012. But Mm-hmm. sir, I can't access my mails. I can access my mails only from 2015. So where my all mails have gone, I have no idea before that. मैम आई थिंक योर मेल्स मस्ट हैव गॉन आर्काइव या तो फिर मैम आपका ना ये जो इनबॉक्स है ना इनबॉक्स फुल हो गया होगा. इफ यू कम डाउन, कैन यू सी ऑन माय वेरी बॉटम ऑफ माय जीमेल अकाउंट, दिख रहा है इधर What, मैसेज sir? डिटेल्स ये कितना साइज है. Where, sir? ये कम डाउन टू द वेरी बॉटम ऑफ योर जीमेल अकाउंट. Yeah, I can see. हाँ तो वहाँ पे देखो ना मैम, मैनेज मैनेज करके आपका स्पेस देखो कितना है. Okay. वो फुल है हो गया. Actually, I keep deleting many mails. It was full like for हाँ दैट some इज द time. रीजन. यस. But then सो I इधर can't access now my mails. no, you can access your mails, but you just keep on deleting it. Ensure that you remain below 90, between 90 and 95. What is 1995 storage परसेंटेज capacity? स्टोरेज कैपेसिटी. व्हाट यू डू ना मैम, क्रिएट वन मोर ईमेल अकाउंट. जो बड़े बड़े मेल्स होते हैं ना आपके ऐसे साइज में Uh-huh. 5 MB, उसको आप फॉरवर्ड कर दो टू अनदर ईमेल अकाउंट और वहां से मेन ओरिजिनल में से डिलीट मार दो. Okay, so then I will be able to access my previous mails. मैम योर प्रीवियस मेल्स विल बी इन आर्काइव प्रोवाइडेड दे शुड बी देयर इन आर्काइव. अगर नहीं है तो फिर दैट मींस दे हैव बीन ओवर रिटन. So matlab I cannot access them, na? हाँ हाँ हाँ. Okay. So only thing is that I have to check in archive. And where is archive, sir? मैम आप यहाँ पे देख लो AR, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो. अदरवाइज यू विल गेट एन ऑप्शन ओवर हियर बिलो. बट मुझे डाउट है कि वहाँ पे भी अभी आपको मिलेगा. एक बार है ना मैम, आप क्या करो पता है, स्पेस फ्री कर दो थोड़ा. देन Okay. रीसेट दिस, रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देन ट्राई. Which particular thing? Refresh, manage. मैम या जस्ट लॉग आउट What ऑफ योर I have जीमेल to वन और टू after टाइम्स the? एंड देन मतलब जस्ट लॉग आउट ऑफ योर जीमेल अकाउंट, देन ट्राई टू लॉग इन अगेन. Okay, I will do that. Thank you, sir. one of our participants is interested in knowing how to become an ethical hacker. Sir, why don't you show them how people can access anybody else's passwords also in spite of those star, 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 still you can access the passwords. हाँ. Yes. See, now what ma'am is suggesting, I'll just show you a demo of it. Okay. This is like Facebook. Okay. And I'm just using one of my accounts. Okay. Now I'll just show you. See, ये जो passwords होते हैं ना, ये saved passwords होते हैं. All of you will have this habit of keeping, remember me, your stored passwords. So I'll just show you how to see this password. मैं क्या कर रहा हूँ? I'm bringing the mouse in the password field. फिर मैं right click कर रहा हूँ. Inspect. I click on that. Once I click on that, I'll see a blue line. ये देखो,
input type is equal to password class with import text. So ये जो है ना type is equal to password. I'm just going to double click on that, change it to word text, press enter, and we can see the password over there in clear text. I'll repeat. So please be a little louder also. Uh, I'll just repeat this. Facebook.com and this trick will work on everywhere. Facebook, Gmail, Orkut, LinkedIn, सबके ऊपर काम करेगा. And I'll just use one of my accounts and I'll put in my password. Okay. Now I'll just show you how to see this password. What I'll do, bring the mouse in the password field. We right click करो. Go to the name of the last option, inspect. Click on that. And then we have to look for the word type is equal to password. तो जो password का word है, double click, change it to word text, press enter, and we can see the password over there in clear text. Yeah. Over here. So yeah, this is how what ma'am was suggesting, कि remember me passwords को तो hack करना बहुत ही simple हो जाएगा if somebody gets access to your laptop or desktop, basically. Now, the question that was asked also was how to become an ethical hacker. Trust me, this is a very good field. मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल द प्रोफेसर्स, अगर आपके पास कोई लड़का या लड़की है जो कंप्यूटर का कीड़ा है और रात के 1-1 2-2 बजे तक जागता है, पेरेंट्स स्क्रीन देख कर डर जाते हैं, बट दे आर वेरी गुड इनटू दिस साइबर सिक्योरिटी ना, आगे जाके इसमें बहुत स्कोप है. Okay, because reason is it is also there is going to be like cyber war or biomedical war. So there are good opportunities in this entire domain also, basically. And you understand this. ये एक ऐसा profession है where I have to use a word ethical before I can say I'm a hacker, right? दुनिया का और कोई प्रोफेशन आके बोलता है आई एम एन एथिकल सीए और एथिकल डॉक्टर और एथिकल प्रोफेसर और एथिकल लॉयर, लेकिन हम लोग को बोलना पड़ता है. एंड व्हेन वी से वी आर एथिकल हैकर, ये काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है. मतलब इमेजिन दिस, कोई यंगस्टर, मतलब जैसे हम लोग, मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है 4-5 साल पहले, शादी में जब जाते थे तो कोई अंकल या आंटी आके पूछता जरूर था कि बेटा आप क्या काम करते हो, ठीक है. और वेरी प्राउडली अगर मैं अंकल को बोल देता था अंकल मैं तो हैकर हूँ, यू कैन इमेजिन द रिएक्शन. अंकल 2 कदम पीछे जाते थे, मोबाइल पॉकेट में जाता था, बाद में विजिटिंग कार्ड भी हाथ में नहीं जाता था. And that is the way that it's a very unique domain, it's a very unique line, but trust me, there are good opportunities in this. And I'll share with, now there are colleges which have started with ethical hacking courses. I think Bombay University has also started with ethical hacking courses. So if you're all interested, I can share the details also. Okay, I'll share my email IDs, I'll share my contact details. You just message me your details, I'll share you all the details of how to become an ethical hacker also. But trust me, it's a very upcoming domain also over here. So if these hackers have ever hacked our phone, can we know whether our phone is hacked or not? Is it Yes, possible? ma'am. Yes, I would request you please run this antivirus within your phone. ओके, मैं एक एंटीवायरस का नाम दे रहा हूँ, लुकआउट या तो फिर क्विक किल. ये आप फोन के अंदर स्कैन मार दीजिए. तो ये जैसे ही आप स्कैन मारोगे ना, ये एंटीवायरस से बाद में आपको बताएंगे कि किसी ने आपके फोन को हैक किया है कि नहीं किया है करके. Sir, it works for iPhone also. Yes, it will work for iPhone also. Yes. So what we are supposed to do? Just Install this. download. Just go into App Store, download this app, lookout, scan your phone. एंड्रॉइड में भी काम आएगा, आईफोन में भी काम आता है. Okay, okay. Look out. लुकआउट. Okay, thank you, sir. All right. There is another question. What about screen pop-ups and security? Ma'am, screen pop-ups are very dangerous things. Okay, especially when young children are now being asked to teach on, I mean, come in front of the screen, and the parents and the teachers are actually not able to see what is happening on their screens. Okay, so nowadays gamers and everybody like that. So I would sincerely request for parents, those who are having their young children, to come online and listen. उनके कंप्यूटर के अंदर एक स्क्रीन ब्लॉकर, एक एड ब्लॉकर करके एक ऐप्स आते हैं. समटाइम्स दे आर पार्ट ऑफ एंटीवायरस इटसेल्फ. प्लीज एनेबल दैट. उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन पॉपअप ब्लॉकर या तो फिर एडी, एड ब्लॉकर करके. प्लीज डू दिस फॉर योर चिल्ड्रंस लैपटॉप और मोबाइल इटसेल्फ विदाउट फेल. मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ देयर आर पार्ट ऑफ एंटीवायरस. हम लोग को खाली सेटिंग्स में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, एंड एंटीवायरस आउटराइटली ब्लॉक भी करना चालू कर देता है बैकएंड के अंदर. All right. So ad blocker is important. Another question is how safe is online shopping? देखो मैम, ऑनलाइन शॉपिंग इज ऑलवेज सेफ एज आई सेड, बट प्रोवाइडेड यू डू द शॉपिंग ऑन सम ब्रांडेड websites. Okay, do not get carried away by any freebies or offers or Diwali offers or something like that. मैं फिर से रिपीट करूंगा,
आप 200 300 500 रुपए की चीज खरीदने जाओगे सोच के ये नई वेबसाइट है, इसके ऊपर ये डिस्काउंट मिल रहा है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो आपके 200 300 500 रुपए के पीछे नहीं पड़े। वो आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे, उसका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स ले लेंगे, और फिर 3 या 6 महीने के बाद उसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स के ऊपर आपका फ्रॉड हो जाएगा बेसिकली। Hence, I always request कि please do not get it carried away by the greed. थोड़ा पैसा ज्यादा दो, but go on a branded website to do your online shopping. So one more question about using credit card or debit card on online shopping. Which one is preferable? हाँ मैम, क्रेडिट कार्ड। Credit card is preferable. हाँ, बट इसकी लिमिट उतनी होनी चाहिए जितना आपका लॉस सहन करने का कैपेसिटी होगा। Okay. Yes, ma'am. All right. Are there any other questions, teachers? Ravneet, if you have any question. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I have one question. My name is Ravneet. I have heard you in both my orientation and refresher course, and I was really happy to see that you are coming again. So my one question is, how safe are wallets? I mean, this is my understanding that suppose I have to pay a particular website, is it safer than giving your credit card details or paying from a wallet? So which is preferable? Wallet. Wallet ना, yeah, even I thought Wallet. the same. I always prefer a wallet. Wallet की जब हम बात करते हैं, should we be adding money into the wallet through our credit cards or through our bank accounts? Which is preferable? See, I would suggest, see, there are two things. एक तो वॉलेट होता है जैसे पेटीएम है, वो वॉलेट है, और एक है गूगल पे और फोन पे जो यूपीआई बेस्ड वॉलेट है। सो मैं प्रीफर करता हूँ वॉलेट, जिसपे हम लोग ने बैलेंस ट्रांसफर किया और वो बैलेंस से हम लोग ने पेमेंट करना शुरू कर दी। गूगल पे फोन पे क्या कर रहा है, वो अपना पीछे बैंक अकाउंट लिंक करता है, तो जितना अपना बैंक का बैलेंस उतना पैसा जा सकता है। बट इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द मनी, देन आई वुड सजेस्ट यू मेक द ट्रांसफर यूजिंग नेट बैंकिंग एंड नॉट योर क्रेडिट कार्ड टू एनी वॉलेट्स। Okay, so net banking is better than credit card. But then I would always think that you are exposing your bank account. In credit card, at least you can control the amount. But मैम, आप क्रेडिट कार्ड का आपका वो एक्सपोज करो, सीवीवी कार्ड नंबर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। जी, exactly. Thank you so much, sir. Thank you. No, but sir, one thing I want to ask, nowadays, most of the people, they use Google Pay and they say you can do it through Google Pay. So we have been doing Google Pay. So I don't know whether it is safe or not because it is अगर आप Google. गूगल पे यूज कर रहे हो, नहीं आप गूगल पे यूज करो, बट गूगल पे के पीछे आपने कौन सा बैंक अकाउंट लिंक किया है? हाँ, वो तो लिंक किया ही है बैंक अकाउंट। कौन सा है? आई होप उसमें एफडीज ना हो। ओके, सी आई ऑलवेज आई एम टेलिंग नहीं होना चाहिए मैम। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि आप गूगल पे के साथ कोई ऐसा बैंक अकाउंट लिंक करो जिसकी लिमिट 20 30 40 50 रुपए की होगी। ऐसा कोई बैंक अकाउंट लिंक मत कर देना जिसके साथ आपका सैलरी अकाउंट लिंक होगा या जिसके अंदर एफडी होगा। बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड देयर इज नो लिमिट टू गूगल पे ना। आप 3000 का भी पेमेंट कर सकते हो, 7000 का भी कर सकते हो, 50,000 का भी पेमेंट कर सकते हो यूजिंग गूगल पे, प्रोवाइडेड यू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट। ओके, जब मेरे बैंक में पैसा ही नहीं होगा तो गूगल पे भी कितना लेके जाएगा? तो यू वांट टू से कि गूगल पे में वो वाला बैंक अकाउंट डालो जिसमें ज्यादा पैसे ना हो। यस, और स्पेशली जिसपे अंदर एफडी लिंक ना हो। हाँ, वही एफडी लिंक ना हो, तो फिर वो मतलब चेंज करना, अब आपको हटा के चेंज कर सकते हैं ना सर वो? Yes ma'am, of course, but do it. Yes. हाँ, yeah, we'll do it. Thank you, Sir, sir. I want to ask one question. Sir, regarding the browser for the internet, many a times the browser shows for say particular websites not secure, even though they are websites like we can say for the LPG websites or even Rediff Mail also. वेबसाइट का प्रॉब्लम है। नहीं ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का प्रॉब्लम है। आई नो दिस इशू सर। ये हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट ने है ना सर, कोई भी सर्टिफिकेट ही नहीं खरीदे बेसिकली सिक्योरिटी के लिए या वो सेफ्टी के लिए। तो ये अगर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है जो आपको पता है सर ये सिक्योर है, लेकिन फिर भी अपना एंटीवायरस या कोई ब्राउजर बोलता है कि सिक्योर नहीं है, गो ऐड कर दो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये एंटीवायरस नहीं सर, ये तो उनका जो ब्राउजर खुद ही बोल देता है। हाँ, ब्राउजर ही खुद बोल रहा है। और इवन मेरा तो सर जियो से है, तो इवन जियो की वेबसाइट में भी वो ऐसे बता रहा है। हाँ नहीं सर, अगर आपको पता है कि वेबसाइट एकदम जेन्युइन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दो। ओके थैंक यू वो सर। वेबसाइट ने अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स अपडेट नहीं की है बस।
ठीक है. Thank you, sir. Thank you very much. Is there a need for any cyber security insurance for general people like us? Yes, provided if you are playing too much, I mean if you're doing a lot of online banking and shopping and everything like that, and if you're using a card of 1 or 2 lakhs, मतलब इतना आपका लिमिट है, आपका ट्रैवल बहुत है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग बहुत है, then it is worth having an online insurance. Yes, but suppose if you are playing within 1 lakhs, I mean if your total this thing is within 1 lakhs, you do not get insurance. Okay. So insurance is available only for those who are like high net It's worth. preferred to you have insurance if you are doing some very high banking transactions. अगर हम लोग के पूरे टोटल ट्रांजेक्शन्स या पूरे महीने में या 2-3 महीने में हमारे टोटल 1 लाख के ऊपर का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता है, there is no point in taking insurance. All right. So is there any possibility that we can prevent completely our phones from being hacked? No, very less chance. Because honestly speaking, I'm telling everybody, there are only two systems in the world. One which is hacked and one which is ready to be hacked. बस, there is no third system only. एक जो हैक हो चुका है और जो हैक होने वाला है. So Cynthia ma'am, we'll have to take all precautions only. We can't prevent our phones from being hacked. And Yes. all the precautions Sachin sir is telling us one by one. So one of our participants has also asked us, Dr. Nishi Kumar, if you happen to know that some fraudulent transaction has taken place, what steps would you take to deal with it? Ma'am, देखो, right now because of COVID we cannot go to the police station or we would not prefer to go to the police station. तो मेरी एक request है, you can immediately file a complaint on this cybercrime.gov.in. Okay, please note this, everybody. You can report anonymously also if you want. अगर आपको कोई woman related crime दिखता है तो भी आप कर लो यहाँ पे. Report other cyber crime also if you want. So this is a very wonderful website which you can report anonymously or you can report other cyber crime also. All right. I'll just share it up. .gov.in is our government website and we can report. What are the chances of these reports getting? No, this is very good, ma'am. That this website, as soon as you file the report, they will send you an acknowledgement and they send a report ka copy to the local police station also. Achha, okay. Sir, can But you this repeat? So is but this this report, okay, sir, or do we have to now again go back to the local police station, or is this? नहीं, at least आपकी report हो गई. But this is not considered as FIR. This is only considered a report. अच्छा, ये FIR का consideration नहीं है. फिर तो local police station आपको बुलाएगा, फिर आप जाओ. But इससे क्या होता है? Problem क्या है? हमारी at least एक complaint तो launch हो गई. Basically, you know. That Sir, means can you please repeat the site? Sure. Wait. Cybercrime.gov.in. I think my screen is visible. Yes, it is visible. Sir, one more question I want to ask. It is regarding whether I'm sorry, sir, I just got lost in words. I'll just ask within a minute. All right. So I ask another question from one of our participants, Jayashri Kale. How is GPay unsafe? She's asking, though you've clarified, but probably she wants to know again. नहीं, जीपे इज अनसेफ इन द सेंस क्या होता है कि जीपे में यू कैन स्कैन ए बारकोड एंड मेक द पेमेंट. तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रिसीट पेमेंट वाला बारकोड देते हैं. एंड जीपे इज इन द सेंस वी आर अटैकिंग द फोन एंड नॉट द एप्लीकेशन. तो अगर आपका फोन ही हैक हो गया होगा तो फिर जीपे भी जाएगा और मोबाइल बैंकिंग ऐप भी जाएगा. एंड जीपे इज अनसिक्योर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इफ यू आर लिंकिंग ए बैंक अकाउंट इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ मनी and you also link to FDs, because then if somebody gets access to your phone or to your GPay account, now they can withdraw a lot of money basically. So that point of view we always say limit your losses basically. But sir, हमेशा इनके लिए पासवर्ड्स तो हम डालते हैं खुद ही, नंबर पासवर्ड्स. हाँ. फिर भी हाँ, फिर भी वो फोन अगर हैक हो गया होगा तो मैम नंबर पासवर्ड भी चला जाता है और ओटीपी भी चला जाएगा. Sachin sir, so in case we are paying anything from your mobile phone or on the website, which will directly link with your bank account, but whenever any transaction be done in spite of us after our transaction, banking will always ask OTP. Right? So that isn't a safe one? No, sir. Because if any person is trying to access our account before paying it, bank will always ask for OTP. नहीं सर, देखो OTP क्या हो रहा है कि if you are making net banking then OTP आएगा, but डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड
Okay, if I'm going to an ATM and if I'm withdrawing the money, if somebody has cloned your debit card or credit card और वो ATM में जाके आपका पिन डालता है तो OTP नहीं आएगा, सीधा डेबिट का SMS आएगा. प्लस Okay. इंडिया में ही OTP का फीचर है. अगर मैं किसी ऑनलाइन इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर ट्रांजैक्शन करूंगा ना, then there is no OTP also. Okay. Basically, like say suppose मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं amazon.com के ऊपर जाके ट्रांजैक्शन करूंगा ना या डील बरोबर. करूंगा तो नो OTP आएगा, लेकिन amazon.in के ऊपर करोगे तो OTP आएगा. ऐसा. Uh, But yes, that is a secured way, who is but it asking? is not fully secured. Okay. Okay. Sir, I recalled my question, sir. Sir, I wanted to ask, nowadays many of them are using legal Windows and they say there is no need of antivirus. The Windows Defender right. is good. So how good That is is the right. Windows Defender नहीं according to you? नहीं सर, वो बराबर बोल रहे हैं. अगर आपका विंडोज जेन्युइन है तो आप आपके विंडोज को अपडेट करो, विंडोज डिफेंडर को अपग्रेड करो, अपडेट रखो. यू डू नॉट नीड एन एंटीवायरस. Thank you, sir. Thank you very much. So how often should we change our passwords of different websites and 45 days. applications? All right. Generally 45 days. Preeti, Social 45 media days चलेगा, goes for everybody. चलेगा, but financial related passwords I know it is very difficult, but financial try करो change करने के लिए. Yes. Basically I'm pretty much sure most of you would have forgotten your Gmail and Facebook password also, क्योंकि आपने डाले ही नहीं होंगे. वो खाली gmail.com टाइप करो, ऐसे Gmail अकाउंट खुल रहा होगा. Facebook तो फोन के ऊपर ही खुल रहा होगा. सोशल मीडिया इट्स ओके, बट एटलीस्ट फाइनेंशियल रिलेटेड पासवर्ड्स ट्राई टू चेंज इट. इनफैक्ट मैं तो ये भी बोल देता हूँ, काफी लोगों ने तो अपना एटीएम का पिन भी नहीं चेंज किया होगा. नहीं, देयर आर few participants who must be continuing with the same pin जो बैंक ने 2-3 साल पहले जनरेट किया होगा. There So might frequently, be. yes. So please keep on changing that. Yes. Sometimes we keep the photos in social media sites, and we've heard and we've read that it is very harmful for girls. How is it misused, and how is it possible that they can be misused? See, generally, photos now they're generally trying to upload it on some, I'll just show you a way to find out if your photos have been, misused or not. I would request us go to Google. Okay, and this is from a girl's point of view. Volume अपना बढ़ा लीजिए sir. Just go to Google, type your name, comma Mumbai. This I show it in every girls conference or seminar or something like that. Go to Google, write your name, comma Mumbai. आप जहाँ पे भी रहते हो. As per Google, this is all search. दिखता है इधर all. Now all के बाजू में क्या है? Images, right? I always ask all the girls to go over there and click on images and then check how many of your photos have gone public. अब आपके कितने फोटोज पब्लिकली अवेलेबल है, और ये आपको मिनिमम 5-10 पेज नीचे जाके सर्च मारना पड़ेगा. ये जरूरी नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट हो, पॉपुलर तो एकदम टॉप पे आओगे. आपके फोटो नीचे भी दिख सकते हैं, और अगर फोटो नहीं दिखता है तो कंसिडर योरसेल्फ लकी. दुखी मत होना. You should consider yourself really lucky that your life has not gone public. Basically, you're still, Google is not much interested into you, so you should thank yourself कि भाई अच्छा है Google को interest नहीं आया है या internet को interest नहीं आया. In case if you find your photo, you need to click on that photo. Right hand side पे Google बता देगा कि वो photo कौन सी website से मिल रहा है. And this is where you need to check the website. If it is LinkedIn, it's okay. Twitter, it's okay. None of the photos should be part of any dating website, any pornographic website या उल्टे सीधे blogspot का part नहीं होना चाहिए. Basically, it should be only where you have uploaded, right? Yes. And my request here is, most of the time girls say कि सर मेरा Instagram का अकाउंट प्राइवेट है, मेरा Facebook का अकाउंट प्राइवेट है, फिर भी लोगों को हमारे फोटोज कहाँ से मिलते हैं? It is because you take the photos first in the phone. आप फोन से पहले फोटो खींचते हो, वो सोशल मीडिया पे जाता है, लेकिन आप लोग भूल जाते हो कि फोन के अंदर और 50 एप्लीकेशन है जिन्होंने वो परमिशन लेके रखे है टू एक्सेस योर गैलरी. जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देख लिया था, ट्रू कॉलर. तो ट्रू कॉलर हैज गॉट एक्सेस टू योर गैलरी फोटोज, तो क्या वो आपके फोटो नहीं देख लेगा? Similarly, Facebook, you have given access to your photos. Other applications have also taken access to your galleries. इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, spend some time on your phone. एप्स के सेटिंग्स के अंदर जाइए, और जिसको भी आपको लगता है कि भाई ये ऐप को इसकी जरूरत नहीं है, मेरी गैलरी की जरूरत नहीं है, तो उसको डिसेबल कर दो. That way you can protect your photos also. Yes. So the first thing everybody should do today is to check the phone and the permissions that we've granted to various applications. Yes.
Another question is it okay to save photos in Google Photos? Yeah, that is safe, ma'am. Google का खुद का है, तो Google Photos चलेगा, ma'am. Yes. All right. Is there any antivirus application that you would suggest for the phone? Because of heavy load, many times we face lags and hang. The phone also hangs many a times. नहीं मैम, anything will do. Quick kill भी चलेगा, lookout भी चलेगा. दोनों में से कोई भी चलेगा, मैम. Either of the two will do. All right. Are there any other questions? Sir, one more question is there. Ask? I just wanted to clarify, Yes, sir. sir. Sir, I wanted to clarify whether what I've heard is true or not. It has been said most of the data of the Indians is already gone. So is it true, sir? हाँ, वो तो ट्रू है सर. इनफैक्ट हम लोग इंडियंस तो और 2-3 कदम आगे बढ़ चुके हैं. हम लोग तो हमारा अंगूठा, आंख और फेस भी दे चुके हैं. We तो even given our biometrics. Forget about our normal data. हम लोग तो हमारा बायोमेट्रिक्स भी दे चुके हैं सर. आई एम टेलिंग यू ऑल द यंगस्टर्स, आजकल लोग अपने फोन के ऊपर अंगूठा मार मार के फोन को लॉक कर रहे हैं. एंड दिस आई से इन ऑल माय सेमिनार्स. सी अवर बायोमेट्रिक्स आर प्राइसलेस बायोमेट्रिक्स. मतलब पूरी लाइफ में ना हस्बैंड वाइफ चेंज हो सकते हैं, ईमेल आईडी, सिटी, प्रोफेशन सब चेंज हो जाएगा. बट बात बताओ, अंगूठा, आंख और फेस चेंज कर पाएंगे? नहीं. और इतना प्रेशियस चीज हम लोग फ्री में दे रहे हैं खाली एक फोन को लॉक करने के लिए, जस्ट टू लॉक के फोन. अब उसमें क्या है, कितने एप्लीकेशन, क्या परमिशन के रखे. एंड प्लीज in India are linked to our Aadhar card. Yes. And Aadhar in the future will be linked to all our financial data. तो Mhm. ये अगर आप कनेक्शन देख सकते हो, तो मेरी एक सारी रिक्वेस्ट है to all the professors over here, please pass on this information, not to give your biometrics on the digital devices as much as possible. And but sir, what happens many a times, whether you go to banks or any other where you need some identity proof, they often is the, even in spite of the Supreme Court saying that Aadhar card is not mandatory, they keep on asking the Aadhar card in the front. सबसे पहला हाथ जो बाहर आता है मांगने का, आधार कार्ड का ही मांगने का बाहर आता है. And in spite of that, sir, many of the times, whether you avail internet services or any other type of services, they go with that that square type. I don't know what is called. I often don't use. They want that. Nowadays what it is called, that logo type is there, you click and you can scan that and do it. I don't recall the name, sir, what it is. हाँ सर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ बताएं, मैं क्या कर रहा हूँ. अगर कोई मेरा आधार कार्ड का नंबर मांगता है ना, तो कैन यू सी माय स्क्रीन ना? Yes sir. मैं मेरे आधार की वेबसाइट के ऊपर गया हूँ और यहाँ पे देखो एक गेट वर्चुअल आईडी जनरेटर है. कैन यू सी दिस सर? Yes वर्चुअल sir. आईडी जनरेटर. Yes. तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने मेरे आधार के सामने है ना, मैं एक इधर मेरा आधार कार्ड का नंबर डालता हूँ, मेरा कैप्चा कोड डालता हूँ, ओटीपी आता है. मैंने मेरे आधार के सामने एक वर्चुअल आईडी जनरेट करके रखा है. तो अगर कोई भी मेरा आधार कार्ड का नंबर मांगता है ना, तो मैं मेरा 12 डिजिट का नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको मेरा 16 डिजिट का नंबर दे रहा हूँ. अच्छा. ओके, उससे मेरा पीछे आधार लिंक है, बट आई एम नॉट एक्सपोजिंग माय रियल आधार कार्ड नंबर ऑल्सो. अच्छा, आप बोलोगे सर जेरोक्स कैसे देते हो? तो मैंने क्या किया है, 16 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर जनरेट किया वर्चुअल आईडी वाला जो इधर आता है, और उसका मैंने ये निकाल के रखा है लेमिनेशन. अब मैं होटल में भी जाता हूँ ना सर, मैं होटल में ये मेरा वर्चुअल आईडी दे देता हूँ आधार कार्ड वाला, इसका पूरा जेरोक्स. ऑटो वाला को समझ में नहीं आता, वो ले लेता है, बस है. बट इससे क्या हो रहा है ना सर, मेरी रियल आधार कार्ड एक्सपोज नहीं हो रहा है. ओके ओके. सर लेकिन ये कितने लोगों को पता होगा, और how is it possible for us to even propagate this, that it is possible to save your Aadhar identity, real Aadhar? But then we never do it. Like we always give our real Aadhar card number. We think it is compulsory, so we have to give that. हाँ मैम, इसके लिए बोल रहा हूँ, henceforth prefer not to give and use this way. Use Sir, this way, when ma'am. actually I generated this, I got an SMS only the number. So हाँ, तो मतलब आपका आधार कार्ड नंबर जनरेट हो गया मैम? no, virtual ID number. हाँ बस है, that is your new आधार कार्ड नंबर now. So that number only I have to give everywhere. Yes, yes. Okay. Somebody who is probably sensible में से नहीं 12 का नहीं है, ये 16 का है, ये तुमने गलत दिया है फिर? नहीं मैम, then you say ये मेरा वर्चुअल आईडी है. And that is also, I think sir, nowadays that banks are also registering. That means they will come to know from where it has been registered. Suppose if it is there from the bank account, they will only give you this type of a number which you can give to other banks. Yes. It's the same thing, no sir? Same thing. Thank and you. one more thing, sir, even Aadhar card, if you are giving for address proof, I recently seen a notification that you have to mask your number. So how you will do that? मैम वही मैं बोल रहा हूँ, you do not have to mask your number. आप वर्चुअल आईडी जनरेट कर दो ना पूरा. Okay. बेस्ट हो जाएगा.
This is way better than masking. At least for the banks and all, you will probably have to give your real Aadhar, but नहीं नहीं, this हाँ you तो भी चलेगा. Yes yes, हाँ. If for the banks ma'am, yes. If you want give your real Aadhar, yes. जो कि But मैं तो after virtually use कर रहा हूँ. मैं तो यूज कर रहा हूँ अभी तक. But sir, if we have to write somewhere, they ask na, write your Aadhar card, write your PAN number. So then we have to write our original number na. नहीं 16 डिजिट का लिख दो. 16 digit का ही लिखना है. हाँ. But do we get actually Aadhar card like a ID with 16-digit number? Yes, you can. मतलब जनरली अगर ये अभी नहीं दे रहा है ये फीचर, जो कि मैंने तो बहुत पहले करके रखा था, तो मैंने क्या किया है, आधार का वो जो going into Photoshop, putting that Aadhar card number and printing it out as a way of lamination. Sir, if sometimes in the form only 16 square I know. is 12 there. 12 डिजिट ही आएगा, 12 डिजिट आएगा, तो आप फॉर्म के थोड़ा बाहर जाके वो 16 डिजिट लिख दीजिए मैम. Okay. Okay. wherever the key is wherever possible, give the 16 digit virtual. Yes. And what happened if someone Aadhar card is lost and something like that? वो तो फिर Original. सर आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लॉस्ट हो गया होगा ना सर, तो फिर आपको वेरीफाई आधार कार्ड नंबर करके ये रहा सर, ये दिख रहा है रिट्रीव लॉस्ट और फॉरगॉटन. Okay. आप यहाँ से आके कर सकते हो सर. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद इसके टाइम पे ना आपको फिर किसी इधर जाना ही पड़ेगा सर. क्या बोलते हैं, सेंटर के ऊपर. Sorry? सेंटर के ऊपर जाके Center के ऊपर. Yeah. हाँ वेरीफाई करना पड़ेगा सर. Okay, tell me one thing. What is the right time to do the net banking? Is a good time in the morning or night time? I heard that night time is very dangerous for doing a net banking. नहीं Money सर, transfer, something like that. No, nothing like that. Except जो fraud होते हैं ना सर, वो generally night में होते हैं. Most of the Exactly. time it's like 11:40 or 11:50 in the night they will do the fraud, because आपकी Yeah. एक दिन की लिमिट होती है ना नेट बैंकिंग की 50,000 या 20,000 एटीएम की और नेट बैंकिंग की. सपोज 11:50 को उन्होंने 50,000 रुपीज विड्रॉ कर दिए, ठीक है, तो 12:01 इट्स न्यू बैंकिंग डे ना, एज पर बैंक इट्स न्यू बैंकिंग डे, तो दूसरी 50 की लिमिट खुल जाएगी ऑटोमेटिक. सो इट इज सेड दैट मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स विल वर्क इन द नाइट. नेट बैंकिंग एक्टिविटीज की जो हैकिंग एक्टिविटीज होगी ना वो रात को होती है सर. So it's a good time that you do it everything on the daytime only. नहीं सर, अगर आप डे टाइम में भी अगर लोगे और आपका डेटा अगर हैक हो गया है तो रात में आपका फ्रॉड होने ही वाला है. Okay. यस. Okay. Thank you. We use video creators and photo editors kind of applications on phone as well as on laptop, wherein we put all our photos. So is it okay? Is it safe to put our photos there? मैम जस्ट रीड द परमिशंस. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अगर आप फोटो एडिटर्स वाला ऐप यूज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू विल हैव एक्सेस टू योर गैलरी फोटोज. ओके, देन प्लीज यूज ए गुड ब्रांडेड ऐप. जो भी एक अच्छा ऐप रहेगा ना जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो वो वाला यूज कीजिए मैम. Yeah. Also, there's another question, as I also mentioned, that there are so many applications we are using as teachers for educational purposes. And these are for recording our screen also and various other purposes. So is there a way we can know that these are secure apps? Ma'am, if you're going for something like Teams or Google Classrooms or something which is like the top 5 के अंदर आते हैं, then these are very well secured, because all these companies now they ensure data privacy, they also ensure no leakage, and they also ensure security basically. तो अगर आप कोई top 5-7 applications use कर रहे हो जिसका across the world people are using it, then there's nothing much to worry, ma'am. Then it's okay. Sir, I want to ask one thing. For using of internet for various purposes, which is more secure, mobile or is it computer? Computer. Thank you, sir. Another question on the YouTube is, if we give Aadhar photocopy, then can we hide the QR code by coloring it with a ball pen? Can, yes. All right. Varsha, I can't understand your question. How to find out this app is trustable? Okay. Again, you'll have to go through permissions. Sachin sir is constantly telling us that please read the permissions that you're granting. Is there any other question here, faculty members? What about PAN card? Dr. Raju Talreja is asking. What about PAN card? Is there any virtual PAN card also? No, ma'am, not as of now. In fact, if I'm knowing the government very well, slowly, PAN card को ही obsolete करने वाले हैं. Because in the last budget also, our finance minister clearly mentioned that even if you don't have a PAN card, you can file the income tax returns using the Aadhar card itself.
So जहाँ तक if I'm understanding, they are going to make Aadhar as the most important prime number, basically through which all other details will be linked in the future itself. But as of now, I'm not aware of any virtual PAN card. As of now, nahi. Okay. Sir, I have a question. See, Hmm. everything is going to be digital in future, and Hmm. then it has lot many security issues. Hmm. So how we are going to go about it? Like as a normal person, we cannot take so many precautions. See, ma'am, that is the reason I'm just saying we need to limit our losses, basically. So if you're more worried about finances, ओके, तो मोबाइल के ऊपर वो बैंकिंग एप्लीकेशन ही मत डालो जिसमें हम लोग की लाखों की लिमिट होगी। वो एक ऐसा बैंक अकाउंट डालो जिसमें अपने पास थाउजेंड्स की लिमिट है और वही हम लोग यूज कर रहे हैं सब जगह के ऊपर, बेसिकली। Okay, whenever you're going to do नेट बैंकिंग, जैसे मैं करता हूँ मैम, मैं कंप्यूटर के ऊपर मेरा नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ ताकि ओटीपी आएगा फोन के ऊपर, बेसिकली। तो इस पे क्या दो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, ओटीपी ऑन द okay, फोन, पासवर्ड ऑन द कंप्यूटर, basically, that way. okay. So slowly you are right, ma'am, but we'll have to worry about the security part, because क्या है, 20 साल पहले अगर इंडिया में एक बैंक लूटना था ना, गाड़ी लेके आओ, वॉचमैन को पैसा खिलाओ, बंदूक रेडी रखो, तब जाके लूट लूट के एक ब्रांच हाथ में आती थी। अभी लोग क्या हाँ, कर रहे हैं, एसी रूम में बैठते हैं, कंप्यूटर पे टक टक करेंगे, कटिंग चाय पियेंगे और हैक करने की ट्राई करेंगे। सिमिलरली इसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई है सिक्योरिटी की। that is what I'm saying. Like you said that change your password every 45 days. हाँ तो वो भी एक बड़ा काम है ना सर, बैठ के हाँ सारे पासवर्ड चेंज करो फिर याद मैम, रखो। हम लोग क्या करते हैं पता है मैम, मैं क्या करता हूँ, कैलेंडर है ना हाँ अपना, गूगल कैलेंडर, दैट इज लाइक हाँ हाँ कैलेंडर अपने स्क्रीन के ऊपर। जब भी हाँ मैं हाँ। कोई इंश्योरेंस निकालता हूँ, मेरा पीयूसी है, मेरा रेलवे का पास है, जिस दिन निकाला ना उस दिन कैलेंडर के अंदर जाके जब खत्म होने वाला था उसका मैं डेट मार्क कर देता हूँ, 24 आवर्स पहले मेरी वार्निंग आ जाती है। फिर ओके एवरी 45 डेज का एक वो रिपीट इवेंट रख दिया है कि चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। ऑल्दो ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी नहीं फॉलो करता काफी टाइम पे ऐसे, बट हाँ एटलीस्ट हाँ मुझे पता है कि भाई मेरा पासवर्ड ड्यू हो गया है करके, हाँ। वैसे सो ना। देन डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी मैम, वो आप कितना नेट बैंकिंग एक्चुअली का पासवर्ड कितनी बार यूज कर रहे हो करके। हाँ, that is true. And moreover, what I want to say that like you generate one password, right? Then you हम्म have to write somewhere because you can't remember so many हम्म passwords. हम्म Then next after 45 days आप फिर से generate करोगे, तो पहले वाले को आप कैंसिल करोगे, तो ऐसे करके तो बहुत सारे कैंसिल 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 न्यू 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 ऐसे होते जाएंगे ना चीजें। मैम, तो हाँ मैम, तो आप क्या करो बताए, जनरली यू नेवर राइट द पासवर्ड द वे इट इज, आप हमेशा उसका शॉर्ट फॉर्म लिखो। जैसे आपका पासवर्ड सपोज Mumbai123 @ है, तो हाँ फिर आप हाँ। खाली M1 @ लिखो, बेसिकली। ओके। डू नॉट राइट द पासवर्ड एनीवेयर द वे इट इज, मतलब तो फिर आप सबको एक, मतलब यू आर गिविंग एवरीथिंग ऑन ए प्लेटर टू द पर्सन। No, that we देन write in the आई नो दैट योर notebook सीक्वेंस now, इज नॉट which we प्रॉपर, have. तो आप क्या करो, हाँ, तो मैम Sir, सीक्वेंस में क्या करो, सीक्वेंस लिखो आप। हम्म। वो ये सीक्वेंस इन द सब। सेंस मुंबई वन Create टू थ्री your एट द own रेट खत्म हो code. गया, तो फिर Create दिल्ली your ले लो, own फिर code बेंगलोर word ले लो। probably. क्रिएट योर ओन दिस थिंग और ट्राई टू क्रिएट योर ओन सीक्वेंस मैम। यस यस, वही है, मतलब इट विल अभी हैबिट वो जनरेट करनी पड़ेगी, अभी तक वो हैबिट हुई नहीं है, तो वी नीड टू। We have, in India, we have banned cam scanner. So, what is a trustable, what is something good scanning application over cam scanner? हाँ, ऐसे बोलते लोग ये है गूगल लेंस, बट जनरली गूगल लेंस ऑल्सो भी थोड़ा रिजिड हो रहा है, तो फिर प्रीफर करें वो अडोफ। बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू मेक यू स्कैन फॉर मोर देन 20 or 50, उसकी कोई लिमिट है शायद। बट एज ऑफ नाउ गूगल लेंस, Okay, Google Lens कैम स्कैनर का ऑल्टरनेट इज गूगल लेंस। scan. All right. How can we save teenage girls who are using most of their social media platforms, and many a times we hear about their accounts being hacked? So, what advisory would you tell them what they should डू follow? नॉट ट्राई टू कीप, सी दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। गर्ल्स के लिए क्या होता है, फेसबुक का पासवर्ड इज सेम एज यार स्नैपचैट एंड या इंस्टाग्राम एंड या जीमेल अकाउंट, मतलब एक भी अकाउंट का पासवर्ड मिल गया ना, मतलब सारे गए एक साथ। तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, थोड़ा चेंज करके रखो पासवर्ड्स को, बेसिकली। एंड देन यू ऑल्सो इंश्योर दैट एवरी सोशल मीडिया ऐप इज नाउ गिविंग यू टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन मतलब क्या, जैसे ही किसी ने आपका पासवर्ड डाला ना, यू विल गेट ए कोड ऑन योर मोबाइल, एन ओटीपी कोड। तो वो अगर आपने एक्टिवेट करके रखा है, देन यू इट्स वेरी गुड वे ऑफ सिक्योरिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट। इफ यू वांट मैम,
I have a good PPT on securing social media accounts. I'll pass it on to you, ma'am, and you can Yes, pass it on to all the other so participants. nice of you. I Those will who feel. forward it to the class, to all the girls in. Even to us, teachers. Yes, yes. Sir, one more question I wish to ask, sir. Sir, nowadays many organizations are saving their data on cloud platforms. So, what is the risk, sir, in this case? You can keep it on your website, sir, on Skynet Secure. You can put some, you already have uploaded a few documents there. These kind of PPTs that you are seeing, upload over there on your website, sir. Everybody can access. If possible. I didn't follow Nilu. What you're saying? Sure, ma'am. I'll Website? share you the link then. I'll share you the link. वेबसाइट है ना मैम स्काईनेट सिक्योर उस पे हाँ. यूं ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं तो you can download the PDF of those documents. So I'm saying this PPT also what he's saying for social networking sites. He may upload it on his own website and probably we can get it from there. Another participant is constantly asking us how to identify branded applications for photos and videos editing, because we often use photos not as they are, but we edit them. So which ones would you suggest? Photo editing and video editing applications. I'm sorry, ma'am. I was not able to hear the question clearly. So, we often use the photo and video editing applications. Which one do you think is more safe than the others? Which one is more branded? Photo editing wala. But ma'am, actually, I am not photo and video editing. If you can give me some names, like Adobe Photoshop is good. At least that name I know. बाकी मैंने खुद ने भी इतने apps use नहीं किए उसके लिए. तो but Adobe I know is good. एक कैनवा है शायद वो भी ठीक होगा. Chetan asks on YouTube, how can we save our files if my system gets attacked by ransomware virus? Put it up on a cloud. आपको आपकी फाइल्स का एक बैकअप लेना पड़ेगा इधर ऑन गूगल, मतलब put it up on cloud like OneDrive or Google Drive or Dropbox, or you need to put it up in an external hard disk or a pen drive. Prefer on a cloud. Sir, how secure is the cloud? Cloud is secure, sir. Dropbox है, Google Drive है, OneDrive है, ये सब अच्छे है, वो चलेगा सर. All right. Dr. Balani sir is there with us. Sir, if you would have any questions that you would like Sachin sir to answer. Actually, the interaction is very, very informative, and I'm hearing each and every question. And I was reflecting that you have asked a number of questions and are quite relevant to as far as this emerging technological world is concerned. So I'm happy that now gradually we are entering into the digital world, and we all are concerned, and you have been asking very good questions. And I'm thankful to Mr. Sachin Dedhia. He has done a wonderful job by answering all the questions very honestly, and he's a very passionate ethical hacker and a very good communicator. And we are fortunate that you accepted our invitation, and you have been there with Bttc since long. And I think the entire teaching fraternity is going to benefit out of it. But I would like to ask you one question. How can a teacher can go online and can secure can you suggest some of the apps that teachers must use which are very safe for the purpose of teaching to the children? Sir, either from a teacher's point of view, no? But from a professor's point of view. Where you have very rigorously guided us like anything, but from teacher's point of view, from student's point of view, what kind of advice you would like to Sachin sir, can we ask you to turn your cam on for a few moments? Yeah, please. हाँ, just 1 minute, मैम, because मैं क्या होटल के वाईफाई पे हूँ ना,
Just 1 minute. I'll just try to put it on my website, my Wi-Fi. Just 1 minute. Yes. Any websites which you may recommend us, maybe safe for the teacher's point of view, for the children's point of view, the Hmm. digital tools Sir, which are अभी तक ना uh, हाँ, sir, as of now, what we have heard so far with all the interactions with schools and colleges, that Google Classroom is more preferred as of now, security point of view, data privacy point of view. Because now what things happened was there were some private applications which have been launched, but school के point of view से क्या होता है या college point of view से क्या होता है, we are also putting other students data also. ठीक है, जब जब हम लोग एक एप्लीकेशन के ऊपर when we ask other students to come, unfortunately we are also asking them to give their data. और हमें नहीं पता कि बैकएंड में वो एप्लीकेशन क्या वो डेटा को यूज करेगा या मिसयूज करेगा बेसिकली. सो दैट इज द रीजन ना सर, अप्रैल और मई में यू विल, इफ एनीबडी वाज आस्किंग मी टू कंडक्ट एनी सेमिनार ना, और कोई बोलता था जूम यूज करो, तो हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट ही कर देते थे. Because Zoom servers were getting, I mean, the data was transferred to China. I mean, the Chinese servers, and it was not even encrypted. मतलब कोई बीच में से भी देख सकता था data. So that is, but now Zoom, because of its popularity, now अभी Zoom खुद ही बोल रहा है कि मेरा data यूरोप के servers में भी जा सकता है. They have paid money to encrypt their data and everything like that. So now it is better. Basically, now it is very good. So, sir, I would suggest start with Google Classroom, then with Teams. क्योंकि Microsoft का सर बहुत अच्छे products भी है basically. So we are always suggesting for Google, Microsoft Teams, and then we go to Zoom. But Zoom from a conference point of view, a teaching point of view, Zoom के features बहुत superb है. But sir, हम लोग है ना audit के logs बोलते हैं. In the sense, if you are a Google, I mean, if you're a Zoom administrator, then at the end of the day, we should know how many people logged in and from where they have logged in, the IP address. अगर वो रिकॉर्ड सेव होता है या वो रिकॉर्ड मिलता है ना सर, देन वी आर ऑलवेज सेफ. कि कल उठ के अगर किसी ने कुछ मिसचिफ किया, किसी के साथ कुछ मतलब ऊपर नीचे हो गया ना, वी कैन ऑलवेज ट्रेस बैक टू द पर्सन हु हैज डन दैट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी. एंड फ्रॉम ए प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सर, वी प्रेफर क्लासरूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम सर. Fortunately, Sachin sir, we have got Microsoft Teams, Office 365 license. We have got G Suite. We have got so all the three platforms which you have suggested. We have got it. Now, my next question is that now we have given a BTDC EDU ID to all the staff members, and now one of our principals from the board, Dr. Neha Jagtiani, in one of our conversations, she mentioned that they have also given the similar college ID to their own students. Like students who are enrolled at BTTC shall be given college this ID domain. ID. They shall operate from that, and all Google Meets the video conferencing apps should be operated with that email IDs because it has got much security features. Is Right. it correct? It is correct. It is correct, sir. That is right. That is Okay, right, so sir. we have given them those email IDs. I am the admin, so I think today I shall initiate this action and put into implement it. We have also given email IDs for Microsoft account. I think Nilumam we have given. Yes, we have. On the similar lines, we need to give BTTC EDU account, email account to all the students to have a secure classrooms or online classes. Yes, sir. Okay, good. Anything else? Yeah, sir, you have founded Skynet Secure Solutions, which is a company headquartered in Mumbai. And congratulations for this. Skynet Secure Solutions was recently recognized as one of the top 25 cybersecurity consultant companies in India. What does your company offer to teachers? Are there any courses or modules, especially for teachers who can probably become computer teachers or whatever way? Is there anything specifically for the education sector? Yes, ma'am. Nowadays, the government is also asking us to train the teachers in such a way with respect to cybercrime security. Like say, most of the time, na colleges में क्या हो रहा है? Like some incident happens. Okay, the girl does not know whom to talk with, or the boys do not know whom to share this incident. और एक बार अगर एक लड़की फंसती है, then the boys will get more encouragement to go after other girls from the area, community building, and something like that. So there are some 2 or 3 days workshops on how to deal with cybercrime incidents, on how to ensure that you pass on this right kind of safety awareness to the ongoing students and to the younger generations and everything like that. So either the teachers can do a
professional course if they want, or they can just gain the knowledge through the workshops itself. I mean, if they're not interested for a so-called certificate, then it's okay. They can take a 2 day 3 day workshop, they can get all the knowledge. So where we teach them, अगर ऐसा incident होता है, deal with them technically, deal with them, psychologically wise, or this is the next steps that you will need to take. But to all the professors, yes, trust me, it's a good field to enter. It is always going to be a value add, because what we foresee is in the next 5 years, robots will walk, drones will fly, electric cars are going to come, which means technology तो आगे बढ़ने ही वाली है. And if we do not match steps with this technology, then technology will come and throw us out. As in, like, so you must have seen because of this pandemic also, like there is a good side and there's a bad side. In the sense now, trainers like us or people like us who were traveling across India are not able to travel. But what I also see was there were some trainers who in Bangalore, there were some trainers in Delhi, and there were some trainers in Bombay for the same module or for the same topic. Now, because of my limitation to travel, I was not able to go to Bangalore and Delhi, and somebody else was doing the work for me. Now, because of this pandemic or COVID, what has suddenly happened is now I'm coming online. So Delhi or Bombay भी मैं ही cover कर रहा हूँ, Delhi, Bombay, Bangalore. But what I feel sad is, since I was good, I'm been recommended. But what happens if I was not good? Because now I have to compete with my same fellow participants, those who were giving the same training in other cities. But the good part of it, what I say is now my trainings are also reaching to inner parts of cities. तो मैं सारे प्रोफेसर्स को यही बोल रहा हूँ. From a professor's point of view, I'm just telling you, white hat juniors and all this online training, Vedantu and everybody, everything is going to come online. So there are time when when the students are going to come prior hand with all this kind of assumptions because they have seen something online, and then they begin to question the whole methodology of the teachers and the professors who have been teaching for decades, like that ways. So we will have to match steps with this technology. We have to just be very, very alert as to what these new things are coming up. I'm also telling all the professors that it is not to the children that, for them to go and see on all this kind of new applications where they're learning. I would request all the professors, आप एक बार एक डेमो अकाउंट बनाओ, आप तो देखो कि उन लोग क्या मेथोलॉजी यूज कर रहे हैं, उन लोग क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, आप जो कंसेप्ट यूज कर रहे हो क्या वो वही प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं करके, you will get some good insights also. But now I'm feeling that technology will come in a very big manner, and I feel the younger generation will nearly need to be very super skilled or little bit more skilled than what, because I feel that technology might take away at least the mundane task or the repetitive task kind of a thing. Yes, sir. Sajin sir, there is one question. Now, as you know, our building is located to next to Taj Hotel, Gate of India. You have come also, Yes, sir. you conducted workshops over there Yes, also. sir. Now, what we have done after the reconstruction of the building, after the renovation, we have installed CCTV cameras in my office, in my where I sit. The CCTV cameras are there. CCTV cameras are there in the lobbies, in the classroom, in the staff room. Do you think that we have taken the adequate steps, or we need to look further into that to ensure that all the girls enrolled over here are more secure? Or what steps we need to take further? Or should there be any policy regarding to that? We would like to know from you. Now, since you are highly experienced, you have dealt with so many colleges, and you are also involved in drafting guidelines for security of the girls in the colleges. So we would like to hear from you. How to ensure Sir, that basically, 360-degree security for all the staff members and the girls students at BTDC. sir, generally based on our experience so far, CCTV cameras within the premise, it's good. And you just need to keep one outside the premise where we can find out from where, who dropped the girl or who picked her up, basically, if that can be done. At the entrance, Also, sir, from a private, right? at the entrance, sir. Yes. And at the entrance, yes. And from a privacy point of view, sir, since we are recording somebody's movements within our premise, we have a right to do that because वो अपना premise है. But still, we have to notify it. So, if we go to any restaurants, उधर लिखा हुआ होता है ना, sir, you are under the watchful eye of, or there is a CCTV camera. So, from a law point of view, we will have to mention that yes, you are under the watchful eye. And also, sir, when you're taking an admission, there is something that we make you have this joining form or something like that. I would I would request if you can have a good lawyer and you make an agreement which says that if somebody is doing any kind of a filming, you know, like किसी और ने भी film निकाल दी है या somebody is doing any kind of information technology act करके एक act है sir. If you do anything under that, okay, you will be punished.
मतलब हमने आपसे वो कंसेंट ले लिया, हमने वो एक रिटर्न लेटर करके लेके रखा हुआ है करके सर, ऐसा। But from whom we shall take this? From the students. At the time of taking the admission, sir, at the time of taking the admission, हाँ हाँ okay, generally there is a consent form. You know, आप एक ज्वाइनिंग कुछ फॉर्म होता है ना, आपका फॉर्म ज्वाइन होता है सर, हाँ मतलब हाँ आप कुछ फॉर्म तो भरवाते होंगे सर उनसे, मतलब yes ऐसे। तो yes उस फॉर्म में बीच में एक पैराग्राफ लिख देने का है, मतलब जनरली कंसेंट फॉर्म और पैराग्राफ, that our premise has been covered under CCTV camera, and you, like, we will be monitoring you, we are informing you that we'll be monitoring you, kind of a thing. Plus yeah if you do any illegal, if you do your own monitoring, if you take a video of anything within our premise, आप बाहर जाके जो करना है आपके योर लाइफ विद इन अवर प्रीमाइस, इफ यू डू एनीथिंग, अगर आपने पेन ड्राइव डाली कंप्यूटर के अंदर और वहां से डेटा कॉपी किया, या हमारे कंप्यूटर के ऊपर या हमारा वाईफाई यूज करके कोई इलीगल वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे हो, और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नो, anything that comes under information technology act, one paragraph would be good enough. Which means what we have done is we have told the students that, boss, we are concerned about your security, plus we are also concerned that if something goes bad we can take action against you, basically. बाहर वाले तो छोड़ दो, हम लोग ही पहले एक्शन लेना नहीं। you want to say that whatever the technological facilities college is going to provide to the students, college has got the right to protect those Yes, facilities. So the students shall not misuse it. So can it be a हाँ, part of the code of the conduct which we can put up on college yes, website? yes, So suppose that if yes, you put it sir. as code of the conduct on the college's website, shall it be considered as we have put these guidelines in the students' domain, and are still we need to take their consent by taking their signature? सर हाँ सर, अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट एक जनरल पेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो कोई भी जहाँ पे उनका साइन आ जाएगा ना सर, वेर एक लाइन लिखा होगा, बाय साइनिंग योर वी हैव अंडरस्टूड दैट यू हैव रेड द कोड ऑफ कंडक्ट, Okay. देन यू आर गोइंग टू फॉलो और ओबे देम, So बस कहाँ पे भी एक it वैसे also सारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखे। हाँ yeah. Another thing is that is it necessary to put the CCTV in principal's room or staff members' room or classrooms? Are there any other guidelines by the government of India not to put the CCTV in the classroom? Is there something like that? No, sir, it depends whether what the classroom is all about, or what if the principal is more worried about the privacy of his own this thing, Yeah. personal thing, then they can avoid putting in the principal's care room also. Okay, that is avoidable. Just sir, I'm just giving my example. I'm right now sitting in a, matlab, I will be going to a government department where there are certain level of inspectors जहाँ पे CCTV camera है, but there are certain level of high officers वहाँ पे CCTV camera है ही नहीं, basically, because they feel that their privacy is more important rather than monitoring. और बाहर से वैसे भी कोई भी अंदर आ रहा है वो तो वैसे भी मॉनिटर हो ही रहा है, ओके, तो अंदर their privacy is more important, so that is where they can escape that particular thing, or they prefer not to do it, तो वो नहीं भी हो सकता सर, वैसा But है। suppose बट that सर अगर आप डाल रहे हो, uh-huh. अगर आप डाल रहे हो तो सर कंसेंट लेना बहुत जरूरी है फ्रॉम ऑल द पीपल फ्रॉम whom we are going to monitor, basically. But और how? और कंसेंट नहीं भी लोगे सर, लेकिन उनका इन्फॉर्मेशन उनको बताना जरूरी है कि हम लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं करके, मतलब दे शुड बी नो, जैसे आप खाली एक बोर्ड मार दोगे ना सर, देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा, like you know we go to restaurants, वहाँ पे लिखा हुआ था CCTV camera, that is also considered that we told you that there is a CCTV camera, it is not that we are putting a hidden camera and we are monitoring you. But is there any guidelines issued by the government of Maharashtra as far as the protection of the employees of organization or the employees who are teaching in For a education? college point of view, na? Yeah, yeah. Because we Sir, I need to look into it. guidelines and we would like to follow those guidelines. So if certain Yes, हाँ, guidelines are there, then we staff members can sit together, deliberate, reflect, हाँ, and take decision in accordance with those guidelines, because we are highly worried about the kind of security system, because only installing the gadgets in the premises won't suffice as far as the security steps are concerned, but we also need to govern by the guidelines, and right है sir. Hmm. so we will require your guidance in that respect. Right. Sir, I'll just go through that. I'll just have a word with somebody, with 2 or 3 people whom I know, and I'll revert back, sir. ये guidelines अगर कुछ है ना, especially with respect to college point of view, वैसे, I'll revert back, sir. Yeah, thank you. Thank you, Sachin. Sir, thank you so much for this very informative session. There is a lot of appreciation all over Zoom as well as on YouTube that it was a very, very helpful session, and we've been able to address the queries
most of the queries rather, I should say. But then if you are there in front, there the questions will keep pouring in, and we really cannot go endlessly. The session was supposed to end at 12:30. It's already 12:40. So a very warm thank you from all of us. You've sorted all our queries and given us a lot of information regarding cyber safety and cyber security. One very important thing that I can at least now target, this is my target for the weekend rather, I should say, that I am going to remember all my passwords and I'm going to change all of them. So, and probably the suggestion that you've given that you may schedule Thank you, the ma'am. password change through your Thank you all the participants. that calendar is a very, very good, that you can schedule your password Calendar, through your calendar. Thank you so much, sir. Let me request our student Supriya to propose a formal vote of thanks for you before you log out. Sure, thank you, ma'am. Thank you, Neelo ma'am. Gratitude turns what we have into enough. So on behalf of BTTC family, I take the privilege to express my heartfelt gratitude to our esteemed and renowned speaker of the day, Mr. Sachin Dedhia, for being so passionate and sparkling our minds on the topic of cybersecurity. He took us to the insights of cybersecurity and gave us tips and tricks which we can use in our daily lives during this corona pandemic. Thank you, sir, for such an interactive speech. My heartfelt gratitude to our respected principal, Dr. Bhagwan Balani, for bestowing upon us so many opportunities to learn and grow and prosper our lives. Thank you, sir. My sincere gratitude to our Vice Principal, Dr. Mandeep Kochar ma'am, and all my respected teachers of BTTC, from gracefully joining us along with us and paving our path for our future. Thank you, sir and ma'am. A token of appreciation to Dr. Neelu Verma ma'am for moderating today's webinar. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, and all the teachers for giving us such a wonderful opportunity to learn and grow in our lives. Now we shall rise for our national anthem. Yeah, Beta, please wait. We have collaboratively organized this webinar along with the MMK College. Okay, ma'am. Okay, we are thankful to Dr. Kishore Peshori, Principal of MMK College, Madam Ravneet, Professor from MMK College, and all the students from MMK College. It was a collaborative endeavor. This webinar was organized by two colleges, Bombay Teachers Training College and MMK. So all the stakeholders of both the colleges are, we can say, jointly responsible, and they have jointly organized this webinar. Apart from this, we have got a knowledge partner, BIP, Board of Industry Academia Partnership. We are also thankful to them for providing the needed technology to us to enable us to organize this webinar. We should not forget their contribution also. And we should also not forget the contribution of all the participants who has joined on the Zoom as well as on the YouTube, and has always encouraged to the BTTC family and faculty to organize webinars like these on different topics. And I think now we shall rise for the national anthem. Thank you all. Thank you. Thank you, Neelu ma'am, for doing a wonderful job. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, all of you. On behalf of MMK College, I would like to extend my heartful thank you to Dr. Balani sir and Needu ma'am also. Thank you so much. Thank you. Thank you. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।